Let's start with today conservative and non-conservative forces. Give heading. Conservative, right? Conservative and non-conservative forces. Conservative and non-conservative forces. Okay, right. Students, conservative, non-conservative means the forces under the action of which work done depends on the initial and the final positions, where the body was when you applied the force, and after application of the force, where the body is now. Initial position and final position doesn't depend in what path the body covered. Okay? Just right, you can understand those forces, right? Right, those forces under the action of which, under the action of which work done depends upon, work done depends upon initial and final positions only. Initial and final positions. Keep on writing. Initial and final positions only. And not on path followed. And not on path followed. Are known as conservative forces. Are known as conservative forces. Are known as conservative forces. Students understood? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, doesn't depend not on the path followed, like gravitational force, spring force, electrostatic force, magnetostatic force. That doesn't depend in what path you moved the magnet, in what path you moved the body from one person to other person, but what is the initial position, what is the final position. Let I have taken a body here, it is the mass is m, so its gravitational force is mg. Let I make the body to reach at this point. I can make it in this way, I can make it to move in this way, I can make it to move in this way, but where was the body initially and to what height I am giving the body? It's the final potential energy at this point, the final energy at this point. Okay, so it doesn't depend in what path you are moving the body to from one position to other positions. So example of conservative forces, right? Gravitational force, gravitational force, spring force, electrostatic force, magnetostatic force. Okay. And student, factors under the action of which work done depends upon the path followed are known as non-conservative forces. Next, right? Those forces, right? Those forces under the action of which, under the action of which work done depends, work done depends upon path followed are known as non-conservative forces.
are known as non-conservative forces. Example, right? Frictional, because it depends on the contact surface. In what way you took the body. Friction may, the coefficient of friction may change, may not change. Viscous force, drag force, fluid friction, etc. Okay. And let's relate conservative force and potential energy. Let's relate conservative forces and potential energy. Right? Conservative forces and potential energy. Give heading. How they are related, conservative forces and potential energy. Students, when conservative force does positive work, the potential of the system decreases. Why? Just see. Student, here, what is the potential energy? Zero. No? What is the potential energy? At a height, mgh. Yes or no? Here potential energy is zero, here potential energy is mgh. See, I am taking the body against the gravitational force, yes or no? But when it comes down, I am taking the body with gravitational force. Getting my point? In which direction the gravitational force is acting and in which direction the body is getting displaced. If I will see, in the first case, mg was acting downward, but the body get displaced. So angle is 180 degree, negative work done. Getting or not? So negative work done means potential energy is 0 to mgh. But positive work means mg is downward, displacement is downward. Getting na? When the body is coming down, mg is downward and the body is getting displaced also downward. So work done is positive and the potential energy is decreasing. So from that point of view, we can conclude one thing. When conservative forces, right? Conservative forces, when conservative forces does positive work, the potential energy of the system, the potential energy of the system the potential energy of the system decreases. So that means work done by conservative force, you can write, keep on the notes, you can follow it later on. Work done by conservative force, work done by conservative force is, student, depends on path followed. Means doesn't depend, right? So doesn't depend means it's a function of displacement. So that is change in potential energy and that is equal to u initial minus u final. Correct? So that means W is equal to Fx na. Force is a function of displacement. Fx dx is equal to minus delta U. Why I wrote minus delta U, understood? This was the reason for that. What increases, what decreases. Just keep in mind with the example. Then we can write f of x is equal to how much? Minus du. Take this one d also. You would take this one d also. Either you take delta or du. So that is du by dx. How the potential energy changes with displacement, correct? Let we want to find the change in potential energy. That means we want to find the final potential energy and the initial potential energy. So by integration we can find, right, integrating both sides for a displacement, integrating both sides for a displacement, that is let x is equal to a to x is equal to b.
we have UB minus UA, change in potential energy, that is equal to negative integration of A to B f of x dx. Just keep it in box. Correct? Just keep it in box. And student, a force is conservative. When we'll say that the force is conservative, the work done against the force is moving a mass between the 2 points depends only the location of the 2 points, not on the path followed. Okay. Just write it. Let's solve some questions on energy. Okay, let's see. Students, a particle is projected at a 60 degree with the horizontal. ठीक है, एक पार्टिकल को मैंने हॉराइजेंटल के साथ 60 डिग्री करके प्रोजेक्ट किया. ठीक है, करेक्ट. विथ ए काइनेटिक एनर्जी के. जब मैंने इसको प्रोजेक्ट किया तो उसका काइनेटिक एनर्जी के था. मान के चलो मैंने u वेलोसिटी दिया, so I can write initial kinetic energy initial is equal to half mu square. Correct. And the velocity, she's asking find the kinetic energy at the highest point. So what is the kinetic energy at this point? Projectile motion पे यहाँ पर kinetic energy क्या हो? Initial kinetic energy इतना था half mu square. And should you know velocity, the component of velocity at highest point is how much? Vx at highest point is how much? U cos theta, correct? Yes or no? Students? Yes, sir. So kinetic energy at highest point, h for highest लिख रहा हूँ मैं. So that is half m vx square. That is equal to half m u square cos square theta. Ux is Vx is Ux cos theta. Yes or no? And that is equal to half mu square is initial kinetic energy. So that is I can write K initial into cos 60 degree ka square. Cos 60 is how much? 1 by 2. So K initial into 1 by 2 cos square. So that is final kinetic energy is equal to initial kinetic energy by 4. Understood the thing all? Let's go for another example, students. Let an athlete in an Olympic Games covers a distance of 100 meter in 10 seconds. एक athlete जो है वो एक 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है. ठीक है, he covers a distance of 100 meter and time is 10 seconds. The total time taken is 10 seconds. His kinetic energy can be estimated in what range? It is asked what could be its kinetic energy. Student, let mass नहीं दिया हुआ है, कोई भी एथलीट का मास हम ले सकते हैं 60 kg. And average velocity जो दिया हुआ है that is equal to 10 meter per second. Then approximate kinetic energy कितना ले सकते हैं हम? Half mv square. Yes or no? So half into m is 60, 10 का square. So that is 3000 joule. है कि नहीं? Students? Yes. क्योंकि अगर वो 10 मीटर 10 मीटर पर सेकंड पे जाता है तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम ना. सो अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड, तो उसी रेंज पे हो सकता है उसका काइनेटिक एनर्जी. गॉट और नॉट? Yes. अच्छा, और एक एग्जांपल देखते हैं. स्टूडेंट, लेट कोई भी एक बॉडी सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है. द रेडियस इज r and kinetic energy पे पार्टिकल मूविंग along a circle of radius r depends on the distance. मतलब kinetic energy distance के साथ ऐसे डिपेंड करता है c s square, right? c s square. c is a constant and s is displacement. c जो है वो एक constant है and s is a displacement. Correct? उसने पूछा है find the force acting on the particle.
Find the force acting on the particle. Correct. See, kinetic energy is equal to half mv square, and that is given cs square here. Yes or no, students? So if I'll be finding v, then v will be approximately how much? See, v square is equal to how much? 2 cs square by m na. If I'll find v, then v will be how much? Root over. So that is root over of 2c by m, और s square को बाहर ले जाते हैं, वो बाहर जाके s हो जाएगा. Correct? And you know acceleration is equal to rate of change of velocity. So acceleration, tangential acceleration circular motion पे मैंने already बताया था dv by dt, है कि नहीं? So that is अगर मैं इसको dv by dt करूँ तो 2c by m तो कांस्टेंट है ना रूट ओवर, तो बाहर की तरफ क्या आ जाएगा? ds by dt, क्योंकि v के जगह पे हमने पुट कर दिए, जो वैल्यू यहाँ से हमने निकाले v की उसको पुट कर दिए ds by dt. So ds by dt is velocity, so finally you can write velocity into 2c by m. This is the acceleration, value of acceleration in terms of velocity. And force acting on the particle, that is tangential force, is equal to mass into tangential acceleration, that is m into v into 2c by m. ठीक है, चलो v की जगह पे क्या पुट करना है, जो हमें मिला था यहाँ पर v की जगह पे, you can write in place of v, that is 2c by m into s, yes, into again velocity, और 2c by m था, तो 2c by m कितना हो जाएगा? Only 2c. So m into 2c by m into s. M cancel हो गया, तो what is the force? 2cs. Understood the tangential force, students? है ना? और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है? mv square by r. चलो लिख देते हैं mv square by r. That is the centripetal force. So net force, the total force, he is asking about the total force. Total force means F is equal to how much? F tangential का square plus F centripetal का square. So that is equal to value में put कर सकते हैं 2cs का square plus mv square by r का square का root over. इसको अगर सॉल्व कर देंगे थोड़ा, तो फोर्स विल बी इक्वल टू, ऑप्शन के हिसाब से अरेंज करेंगे तो 2cs by 1 plus s square by r square. ये फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला नहीं है, ये एक टर्म है, इसको नोट कर सकते हो. जस्ट नोट इट डाउन एंड आस्क मी द डाउट व्हेयर यू आर हैविंग. फ्रेंड्स, चेन ऑफ लेंथ इस क्वेश्चन पे सब दिया हुआ है. L, mass m, lies on the surface of a smooth hemisphere of radius r, in where the radius is very greater than the length of the chain, with one end tied to the top of the hemisphere. Find the gravitational potential energy of the chain. Correct. Glad there is a hemisphere, students. Exactly इस टॉप से एक चेन इस तरह टाई किया गया है, ध्यान से देखो. And this is the radius let, this is the center and this is the radius. Correct. और इस चेन को हमने क्या किए? With one end tied to the hemisphere, find the gravitational potential energy of the chain. What is the gravitational potential energy of the chain? Correct. Let's know, students. Potential energy means simply you know mgy. Let's see. स्टूडेंट, जैसे हमने पहले कुछ केसेस पे इस तरह के क्वेश्चंस भी किए थे. चलो कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ द चेन. चेन के एक स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर करते हैं. लेट दिस इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ ए चेन. ठीक है, एंड दिस इज थीटा. करेक्ट. एंड दिस इज द रेडियस. स्टूडेंट्स, आर्क के बारे में आपको पता है पहले से. दिस इज थीटा, दिस इज रेडियस आर, लेट दिस इज डी थीटा, देन थीटा इज इक्वल एल बाय आर में ये आर डी थीटा हो जाएगा ना लेंथ. यू नो थीटा इज इक्वल एल बाय आर, और यहाँ पर मैं डी थीटा लिया हूँ. सो एल इज इक्वल आर डी थीटा. तो ये वाला जो लेंथ हो गया चेन का, वो कितना हो गया? आर डी थीटा हो गया ना. करेक्ट. Yes, sir. अच्छा, तो जितना पार्ट मैंने कंसीडर किया हूँ, लेट दैट पार्ट का मास कितना है? मतलब उसी एलिमेंट का, स्मॉल एलिमेंट जो हम लिए हैं उसका मास, अगर टोटल मास m है तो स्मॉल एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा? dm. करेक्ट.
and the dm is equal to how much? m by l into r d theta. मास पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ ऑफ द पार्ट, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं ना. 10 मीटर था, 10 केजी था, तो पर यूनिट में कितना है? 10 by 10, या फिर 20 मीटर पे 10 केजी था, तो पर मीटर कितना था? 0.5 केजी. यस सर नो? तो इस तरह पूरा लेंथ जो भी था, पूरा लेंथ चेन का एल था, मास एम था, तो पर यूनिट लेंथ में कितना मास था? एम बाई एल. और मैं जो पार्ट लिया हूं उसका लेंथ कितना है? आर डी थीटा है ना. सो द स्मॉल मास आई कैन फाइंड डीएम इज इक्वल टू एम बाई एल इंटू आर डी थीटा. इज दैट क्लियर टू ऑल? अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूरा चेन के लिए अगर यू है, तो इसके लिए स्मॉल चेन के लिए डी यू लेते हैं. सो डी यू इज इक्वल टू स्मॉल मास डीएम. और ये जो डिस्टेंस मान के चलो, ये जिस डिस्टेंस पे ये है, तो वो डिस्टेंस को थोड़ा वाई मान के चलो. करेक्ट? यस सर नो? सो डीएम इंटू जी वाई. And the gravitational potential and energy of the chain is equal to how much, students? मुझे इस y को कहां से कहां तक उठाना है? अगर रेडियस r है कि नहीं, पूरा चेन l है, तो देखो थोड़ा. सो दैट इज u. अगर हमें निकालना है तो मुझे du को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब dm इंटू जी वाई. करेक्ट? एंड दैट इज इक्वल टू 0 to l by r. बिकॉज ये जो एंगल है कितना है? टोटल रेडियस r है. ये जो एंगल हम लिए हैं, लेट मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, पूरा रॉड जितनी एंगल पे रखा हुआ है. So this total length is how much? Theta is equal to L by R, na students? So this total length will be how much? Semi? Theta is equal to L by R. So L is equal to R theta, correct? Yes or no? Getting or not, students? तो थीटा जो वेरी करेगा, जो थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 to L by R तक वेरी करेगा ना, जी वाई. करेक्ट? सो 0 to L by R dm into जी वाई. लेंथ ऐसे वेरी करता है. नेक्स्ट लेट्स सी, dm की जगह पे हम क्या डालेंगे? m by l इंटू आर डी थीटा पुट करेंगे ना, जो पहले से हमें मिल चुका है डीएम के बारे में. करेक्ट है ना? और g अपनी जगह पे रहा. स्टूडेंट यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने इस एंगल को थीटा लिए हैं. दिस इज डी थीटा, लिटरली दिस इज डी थीटा एंड दिस इज थीटा. करेक्ट? इफ दिस इज थीटा, दिस एंगल इज गोइंग टू बी आल्सो थीटा, and the radius is, this is the radius r. If this is theta, then y is equal to r cos theta, na students? From here you can see in this triangle, if this is radius r, this angle is theta, means this angle is theta. So y can be written as r cos theta or not? सो dm की जगह पे हमने लिखे m by l r d थीटा, g की जगह पे g लिखे, r की जगह पे, मतलब y की जगह पे r cos थीटा लिखे. ठीक है? एंड लिमिट इज 0 to l by r. u इज इक्वल टू हाउ मच? mg स्क्वायर, पूरा कॉमन ले आते हैं, mg r स्क्वायर, 2r है ऊपर, बाय l भी नीचे है, ले आते हैं. अंदर पे क्या रहेगा? साइन थीटा सिर्फ रहेगा. करेक्ट? एक्चुअली r cos थीटा d थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा. थीटा इज हाउ मच? 0 to l by r. ये जो l by r हमने लिखे थे वो थीटा की टर्म्स पे लिखे थे. अभी समझ पे आ रहा है? तो पूरा एंगल थीटा जो मैं बोल रहा था, जब यहाँ पर तो थीटा जी 0 था, जो पूरा यहाँ पर पहुंच गया तो थीटा कितना आ गया? 0 to थीटा हो गया, l by r. सो पूरा वैल्यू पुट करने के बाद u इज इक्वल टू, देखो एक बार, mg r स्क्वायर बाई l इंटू साइन थीटा, मतलब साइन l by r. साइन 0 तो 0 है. करेक्ट? अंडरस्टूड और नॉट? So you got u is equal to how much? m g r square by l into sin l by r. So this is the potential energy. हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस पे इसको याद रखने की मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि थोड़ी ना हम एग्जाम पे 1 मिनट 2 मिनट में जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसके लिए इतना ज्यादा डेरिवेशन करेंगे, तो ये छोटे छोटे चीजों को आपको अच्छी तरह से समझना होगा. राइट? ठीक है?